So, hello everyone, and welcome to Bastion Research first webinar. And thank you for joining us with us today and taking time off. And first of all, we would like to thank you all for placing trust in Bastion Core and being the early subscribers since we have launched only a month or so back, and the response has been overwhelming. Right. And we are excited and committed to delivering or adding a good amount of value to your investing journey. So my name is Parth, and I'm one of the co-founders of Passion Research. With me, I have my colleague Naved and Sanjay. Uh, so, before we get started, let me just give a brief background about us. So, I met Naved Sanjay way back in 2015, when we started our investing journey together, and we met at some CFA coaching institute. And since then, we have been in touch. And luckily for us, we had the opportunity to work with few of the industry stalwarts in the last 5, 7 years, right? And so one fine day, we were discussing all the problems that our employers were facing. And, one of the thing, a common problem that all of our employers were facing was of hiring a good talent and at the same time retaining, the talent, especially in the core research team. And that's when we realized that there is an opportunity here. And so in early 2022, we decided to launch Bastion Research with the sole purpose that we would be delivering good research as well as be an extended research arm for the institutions, family offices, PMS advisors, or investment advisors as such, so that even if there is an attrition in the core team, the main business of research does not get impacted, right? But as we, progressed in our journey, we realized there was another significant gap, and that was with DIY investors, where, diligent and committed DIY investors did not have time and the resources to generate actionable research-based insights. And so that's where, we launched Bastion Core with the sole purpose that investors should make informed decision making. Right? They should know what they own it, why they own it, and what are the risks involved, and they should be updated with whatever is, happening in their portfolio. And that was the intention behind it. And as you can see, yeah, most of you must have gone through our reports that they are quite detailed, and that is the reason why, they are detailed, that we want you to know everything, and everything that we know about the business, you should also know about the business if you, read the report, right? And that was the sole purpose, that the reports are so detailed. So the intention is not just to give you buy and sell recommendation. I think there are a number of platforms giving that. Intention is that you should be aware, right? Okay. So after that also, so today's session is about Bayesian quant, and I'm very excited about this session, to be honest. The sole reason is, so I'm a big fan of automating things that can be automated to a large extent, right? And this is where, factor-based investing or quant investing uh, comes into picture, where even if you follow a simple structured process of investing, you can create a huge amount of outperformance. And many people believe that's not possible, and they have their own apprehensions, and which is fair. But if a simple strategies can create huge amount of outperformance, uh, if you just stick with it for a long duration, and don't chicken out at the wrong time, right? And that is what you will also start believing by the end of this session. So without further ado, let me just start. So the reason we decided to add a Bayesian quant type of a product was the problem with today's screening method. So, if you, let's just do an experiment and run a screener. Let's say I run a screener where I say that average return on capital employed is more than 15%. Sales growth is around 10%, which is a decent task, not too aggressive. My P ratio is less than 20, and I don't want leveraged companies, and essentially all the banks and NBFCs will get weeded out. So if I run this query, what I get is almost get 152 companies to screen from. And to be honest, for full-time person like me, also it is difficult to screen for ideas from these 152 companies. Let alone DY investors, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा difficult हो जाएगा कि 150 companies को go through करना, right?
एंड प्लस मुझे ये भी नहीं पता कि अगर 5 साल पहले ये सेम स्क्रीन सेम फिल्टर्स के साथ रन किया होता तो मुझे आउटपुट कैसा मिलता, राइट। एंड अज्यूम करते हैं कि 100 150 तरह की कंपनीज पिछले 5 10 साल में आती, तो एज अ बास्केट अगर मैं 100 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करता तो किस तरह का रिटर्न एज अ पोर्टफोलियो लेवल पे जनरेट करता, अगेन वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो दिस इज अ ड्रॉबैक दैट दिस ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग मेथड है, बिकॉज वो एक पॉइंट इन टाइम पे, राइट। तो this is where Bayesian quant comes in, and so what this essentially gives me is कि first सबसे पहले number of companies इसमें limited है 25 to 30 तक, right। and so 27 कंपनीज अभी, राइट। तो 25 to 30 कंपनीज तो एक मैनेजेबल लिस्ट हो गई मेरी, राइट। दूसरा, ये स्क्रीन इट हैज बीन बैक टेस्टेड, सो अगर यही स्क्रीन में हर महीने पिछले 10 साल तक रन करता, तो जो कंपनीज 25 30 कंपनी आती है ना उसमें मैं इन्वेस्टेड रहता, तो व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स आई वुड हैव जनरेटेड। तो वो चीज भी आई कैन इजीली सी कि निफ्टी 500 में अगर 15% का रिटर्न दिया है तो उसके सामने वो 27% का रिटर्न एज अ स्क्रीन दे रहा है। नाउ आई हैव मच मोर कन्विक्शन इन द स्क्रीन कि पास्ट में ये जो स्क्रीन है ना, इसने ऐसे आइडियाज दिए थे या ऐसे स्टॉक्स दे रहा था जिसने आउट परफॉर्मेंस जनरेट किया। सो अब मेरे पास वो कन्विक्शन है कि ये फाइनली ये जो स्क्रीन आज आउटपुट दे रहा है वो भी आउट परफॉर्मेंस जनरेट कर सकता है, राइट। तो दैट वाज द सोल रीजन फॉर एडिंग दिस Bayesian कॉन, एंड सो फॉर यू टू अप्रिशिएट कि जो ये आउटपुट है वो बेटर है कि नहीं। सो वी विल गेट बेसिकली गेट इनटू द रूल्स की एंड डिकोड द रूल्स कि क्या क्या रूल्स थे जो हमने इसमें यूज किए, एंड दे आर वेरी सिंपल रूल्स, राइट। एंड यू विल बी सरप्राइज कितने सिंपल रूल की वजह से इतना आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। एंड सो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंडेटरी डिस्क्लोजर that we are सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन होगा तो डोंट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। ओके, सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्टॉक, आइडिया जनरेशन करते टाइम, व्हेन यू फाइंड ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू स्टॉक, या यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू ब्राइड और ग्रूम टू गेट मैरिड, वी वांट एवरीथिंग, राइट। कि अपन को, बट देखो ब्राइड और ग्रूम के मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है आज, लेकिन एटलीस्ट फॉर द फॉर्मर की स्टॉक सिलेक्शन में मुझे ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यूएशन सब चाहिए। इनहेरेंटली कोई भी तरह की कंपनीज में अपन इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, अपन यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छी ग्रोथ मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का कंपनी सस्ते में मिल जाए, बट वो हर बार ऐसा होता नहीं। कहीं पे वैल्यूएशन मिसिंग होगी, बजाज फाइनेंस अपन कोई नहीं ले पाया काफी हद तक बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थे, या बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, लाइक अंबिका कॉटन इज एन फैंटास्टिक बिजनेस, वैल्यूएशन प्रोबब्ली यू माइट, आई थिंक वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड एसेट के नीचे चल रहा है, ऐसा कुछ है। सो अगेन वैल्यूएशन वाइज फेवरेबल है, क्वालिटी वाइज फेवरेबल, बट ग्रोथ नहीं है, तो मार्केट इज नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू द बिजनेस। Absence of quality, so any kind of business like Brightcon Group or any that has some issues, CG issues or something like that, growth है, valuation है, but कोई quality नहीं है, right? But since we need all three of them, so what we have tried to do uh, इस स्क्रीनिंग मेथड में is कि तीनों पैरामीटर्स पे हमने सारे स्टॉक्स को रैंक करने की कोशिश की, एंड कंबाइंड रैंक पे जो सबसे ऊपर आ रहा है उस स्टॉक को अपन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यू कैन नॉट रेंडमली 500 के 500 स्टॉक पे रैंकिंग नहीं कर सकते। सोल रीजन इज देयर विल बी कंपनीज जिसमें सीजी इश्यूज होंगे, जिसके बैलेंस शीट बहुत ज्यादा ही पुअर होगी, वो सब कंपनीज को पहले वीड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्ट गोइंग अबाउट एंड रैंकिंग द कंपनीज। तो उसके लिए भी हमने एक मेथडोलॉजी फॉलो की है, जिसपे जैसे कि सबसे पहले तो हमने बहुत बेसिक किया कि बीएफएसआई हटा दिया। सिंपल रीजन कि जो पैरामीटर्स सेल्स ग्रोथ और क्वालिटी के हमने लगाया है वो बैंकिंग या इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो हमने हटा दिया। हमारे पास 400 कंपनी का यूनिवर्स बचता है, उसमें हमने एक स्मार्ट रूल लगाया म्यूचुअल फंड होल्डिंग का और ऑल्टमेंट जेड स्कोर, ये दो मेजर रूल लगाए जिससे मेरा नंबर ऑफ कंपनीज क्लीन हो गई। फाइनली मेरे पास जो कंपनी आती है वो एक क्लीन सेट ऑफ कंपनीज आती है कि ये डिसेंट साइज की कंपनी है, प्लस इनमें आई वुड बी मोर आई वुड हैव मोर गुड कन्विक्शन कि इसमें कोई सीजी इश्यूज भी नहीं है, ठीक है। सो एक एक करके रीजंस पे जाएंगे, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टच अपॉन कि जो बैक टेस्टिंग हमने की है वो किस मेथडोलॉजी और किस assumptions और ये सब पे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, निफ्टी 500 का स्टार्टिंग यूनिवर्स लिया, एंड वो स्टार्टिंग यूनिवर्स में हमने डीलिस्टेड अमालगमेटेड कंपनीज को भी इंक्लूड रखा,
ताकि सर्वाइवरशिप बायस नहीं आए। अगर मैं डीलिस्टेड अमालगमेटेड बैंकरप्ट कंपनीज को अपनी यूनिवर्स से हटा देता हूँ और उस पर बैक टेस्टिंग करता हूँ, तो मेरा रिटर्न एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न दिखेगा जो एक्चुअल मार्केट में होगा नहीं, राइट। तो हमने उसको इंक्लूड रखी है सर्वाइवरशिप बायस अवॉइड करने के लिए। सेकंड, लेट से आज 31 मार्च 2022 पे है, ठीक है। तो जब बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, 31 मार्च 2022 में मेरे पास FY22 के फाइनेंशियल्स नहीं आते। मेरे पास उसके फाइनेंशियल का डेटा 2 महीने 3 महीने बाद आता है, जब क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, राइट। एंड डिटेल्ड फाइनेंशियल जो एनुअल रिपोर्ट के साथ आते हैं वो तो मेरे को 3-4 महीने सितंबर तक मिलते हैं, राइट। तो व्हाट हमने क्या किया, सिर्फ बैक टेस्टिंग में, लाइव मॉडल में तो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो रहा है, बैक टेस्टिंग में हमने 7 मंथ्स का लेग डाल दिया। तो जब मार्च 2022 आता है ना, तो मेरे मॉडल में मार्च 2022 के नंबर अक्टूबर 2022 में जाके अपडेट होते हैं। इतना बड़ा लैग रखा है ताकि कोई भी जो एक लुक अहेड बायस बोलते हैं उसको, कि नंबर्स आए नहीं उसके पहले तुम्हारे मॉडल ने बैक टेस्टिंग में इनकॉर्पोरेट कर दी है, तो वो चीज का भी हमने टेक केयर कर लिया इधर। थर्डली, जो पोर्टफोलियो है हमने ऐसा अज्यूम किया है कि हर महीने अगर मैं ये स्क्रीन या इस तरह के पैरामीटर्स रन करता, क्या कंपनीज आती और वो कंपनी में मैं हर महीने इन्वेस्टेड रहता, तो कितना आउट परफॉर्मेंस या रिटर्न बेसिकली जनरेट होता, राइट। सो और हमने एस इक्विटी का डेटाबेस बेसिकली यूज किया है इसको पूरे बैक टेस्टिंग को रन करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू ईच एंड एवरी रूल। सो सबसे पहला था हाँ, तो जस्ट फॉर लाइक टू लाइक कंपैरिजन, निफ्टी 500 ने जो 15% का रिटर्न जनरेट किया है विद ड्रॉ डाउन बेसिकली कि 100 किसी एक पॉइंट पे जब पोर्टफोलियो लेट से 100 रुपीज का था, उधर से गिर के 27 रुपीज उधर से गिर गया स्टॉक, राइट। तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन 27% के आसपास आ चुका है तुम्हारा, राइट। तो सो मेरा जो यूनिवर्स है, जो स्टार्टिंग यूनिवर्स, एक सेकंड मार्क कर लिया था। सो मेरा जो कंपेरेबल यूनिवर्स है वो ये है, क्योंकि मैंने बैंक्स हटा दिए इसमें से, राइट। एंड ठीक है, रिटर्न जो भी है ड्रॉडाउन वगैरह बहुत ज्यादा है, एंड दिस नंबर शुड इम्प्रूव। सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, दिस नंबर इज हायर द बेटर, राइट। काल्मर ऑल्सो हायर द बेटर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली लोअर द बेटर, राइट। एंड केगर तो अपन को पता ही है, हायर द बेटर, ठीक है। जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव, काल्मर और शार्प क्या होता है, तो शार्प इज बेसिकली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की 1% का रिस्क लिया तो उसके सामने कितना रिटर्न में जनरेट कर रहा हूँ। मोर देन 1 इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड नंबर। करंटली ये नंबर 1 के नीचे है, एंड वी विल सी कि कैसे हमने ये 1 के ऊपर लेके जाएंगे इसको, ठीक है। और इसमें पूरे रिटर्न कंप्यूटेशन में डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है, तो नेचुरली ये रिटर्न्स जो लाइव मार्केट के जो फाइनल रिटर्न जो दिखे वो कम है कंपेयर टू जो एक्चुअल रिटर्न रियलाइज होते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव अप्रोच जो हमने लिया है, राइट। सो सबसे पहला रूल जो इधर डिस्कस किया था, मैंने BFSI कवर कर दिया, अभी इधर स्टॉक म्यूचुअल फंड होल्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला रूल जो हमने डाला ना, म्यूचुअल फंड रूल डाला। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जनरली लोगों को रहता है, जो नंबर बेस्ड क्वांट बेस्ड फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में रहता है, कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस डज नॉट गेट कैप्चर्ड, राइट। एंड सबसे स्मार्ट वे टू डू दैट, टू कैप्चर इट इन योर डेटा, इज फॉलो द स्मार्ट मनी विच इज योर म्यूचुअल फंड्स, राइट। एंड देज आर कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट मनी। एंड म्यूचुअल फंड्स ऐसे है जो इफ देयर इज अ साइन ऑफ ट्रबल, तो सबसे पहले वो एग्जिट कर जाएंगे स्टॉक में से। अगर वो स्टॉक में से एग्जिट करते तो मेरा मॉडल भी स्टॉक में से सबसे पहले एग्जिट कर जाएगा। सो मैंने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहीं ना कहीं मैंने इजीली इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सेकेंडली, कोई भी कंपनी जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है, कहीं पे भी रेड फ्लैग्स होते हैं जो इजीली शायद डेटा में नहीं पता बट क्वालिटेटिवली मार्केट को अवेयर रहते हैं, वो सब कंपनीज एनीवेज म्यूचुअल फंड्स अवॉइड करेंगे या ज्यादा होल्डिंग उनमें रहेगी नहीं, राइट। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो कंपनीज है, या कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस जो कंपनी फेस कर रही है जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में है, क्वांटिटेटिव में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इधर कैप्चर हो जाएगी। सो जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू, क्या होता है व्हेन आई एक्सक्लूड कंपनीज दैट हैव लो म्यूचुअल फंड होल्डिंग, अगर मैं उसको सिर्फ एक्सक्लूड कर देता हूँ, सो ये मेरा बेंचमार्क यूनिवर्स था, इसको मेरे को आउट परफॉर्म करना था, यही चीज 16% की 20% हो गई, ठीक है। सेकेंडली, मेरा जो ड्रॉडाउन है जो 47-48% के आसपास था, वो 41% हो गया। मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन इंप्रूव हो गया। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो शार्प और कार्मर होते हैं वो भी मेरे इंप्रूव हो गए बेसिकली, राइट। तो सो दिस इज ऑल द इम्प्रूवमेंट दैट हैज हैपेंड जस्ट बाय सिंपल रूल कि मैं जिस कंपनी जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है उसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंपनीज भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। 400 से अपन 141 कंपनीज पे आ गए, तो बहुत ही मैनेजेबल लिस्ट भी होगी एट द सेम टाइम, ठीक है। नाउ जस्ट टू अप्रिशिएट कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज ये म्यूचुअल फंड रूल ने निकाला है,
सो इफ यू कैन सी, म्यूचुअल फंड रूल लगाने से पहले मेरे पास कंपनी आई थी कॉक्सन किंग, जयप्रकाश है, ये सब मेरे मेजर लूजर्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा मैंने पैसे गवाए, एज यू कैन सी 90% प्लस। ठीक है, ILFS, Reliance Communication, Reliance Power, all future retail, all kind of companies are coming here. इफ यू लुक एट द टॉप 20 लूजर्स जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड रूल लगाया, सबसे पहले तो लिस्ट ही 90 से चालू हो रही है, इधर लिस्ट 99 से चालू हो रही थी, राइट। तो एक तो ये ड्रास्टिकली ये लिस्ट पूरी मैंने खत्म कर दी एसेंशियली, राइट। अब इधर ऑब्वियसली नई सेट ऑफ कंपनीज आई है जिसके लिए अपन ऑब्वियसली नए रूल्स लगाएंगे टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, अब दूसरा रूल जैसे इधर डिस्कस किया, ऑल्टमैन जेड स्कोर। ठीक है, नाउ ऑल्टमैन जेड स्कोर एक ऐसा रूल है, बैंक्रप्सी रूल है। व्हाट वो बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करता है, वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जो हाई लेवरेज पे है एंड उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी इज पुअर है। ठीक है, एंड इट बेसिकली गेजेस कि भाई क्या लाइक्लीहुड है कि अगले 2-3 साल में कंपनी शायद बैंकरप्ट हो जाए। तो कंपनीज जिसका ऑल्टमैन जेड स्कोर इज बिलो 3, वो हमने अपने यूनिवर्स से हटा दी। ठीक है, अगेन मेरे को फाइनली डिस्ट्रेस कंपनीज या हाईली लेवरेज कंपनीज नहीं चाहिए मेरे यूनिवर्स में। ठीक है, व्हेन आई डू दैट ऑब्वियसली नंबर ऑफ कंपनीज मेरी कम हो गई। ठीक है, विच इज नेचुरल प्रोग्रेशन। बट सबसे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है, केगर में तो हुआ है, आई डोंट मतलब ठीक है, दैट्स अ गुड पार्ट, बट व्हाट आई एम नोटिस करने वाली चीज है कि केगर, सॉरी, ड्रॉ डाउन तुम्हारा 41 से 26 हो गया, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया, तुम्हारा शार्प काल्मर रिस्क एडजस्टेड मेट्रिक पे ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 आ चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि ऑल्टमैन जेड्स को लगा के मैंने कोई लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी, एवरेज मार्केट कैप उन कंपनीज का 19,000 का 19,000 ही रहा, राइट। तो मैंने वही स्मॉल मिड कैप कंपनीज में से गुड क्वालिटी कंपनीज टर्न आउट कर दी एंड रिटर्न इंप्रूव किए, ड्रॉडाउन कम कर दिया, रिस्क मैट्रिक में सब कुछ इंक्रीज कर दिया, राइट। दिस इज जस्ट प्लेन सिंपल रूल्स है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग का लगाया, ऑल्टमैन जेड स्कोर का लगाया, अपन सबको पता था ऑल्टमैन जेड स्कोर कहीं ना कहीं अपन सबने पढ़ा है, बट किसी ने अप्लाई करके इस तरह देखा नहीं, राइट। सो ये दो रूल लगाए, इससे मेरा फाइनली इफ यू कैन सी, अपन 16% से 23% पे आ गए, 47 से 26 पे आ गए, जो 0.46 था हम क्लोज टू डबल कर दिए 0.93। सिर्फ दो सिंपल रूल्स है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन कि ऑल्टमैन जेड स्कोर ने किस तरह की कंपनीज वीड आउट की। एज यू कैन सी, पहले पिछली लिस्ट में इधर 90% हमारा स्टार्टिंग था, उधर से लेके 57% तक कंपनीज जा रही थी। इधर अब हमारा वापस बॉटम लूजर में 73% जितने आ गए इसमें, बट जो हाई लेवरेज कंपनीज रहती है, जिन्होंने पैसा गवाया है, वो सब कंपनीज ये लिस्ट में से, जो लिस्ट में इधर थी, वो ये लिस्ट में वो हाईली लेवरेज कंपनीज नहीं रही, राइट। तो ये इधर एक वो शार्प इंप्रूवमेंट आ गया मेरा। नाउ, सो वन ऑफ द डेटा क्लीनिंग एक्सरसाइज दैट वी हैव डन इज कि इधर से इधर के बीच में ना, जब मैं इधर फाइनली स्टॉक्स को रैंक करना चाहता हूँ, तब मेरे को 5 से 6 साल के फाइनेंशियल्स चाहिए। अब काफी है, 94 में ना ऐसी कंपनीज थी जो IPO वाली थी, या कोई कंपनी बड़ी कंपनी से डीमर जो कि अलग से लिस्ट हो गई, जिसके 1 या 2 साल के फाइनेंशियल्स अवेलेबल है। उस केस में मेरे पास लाइक टू लाइक कंपेरिजन नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसी कंपनीज ही रखी जिनका 5 से 6 साल के फाइनेंशियल्स मेरे पास अवेलेबल है, तो ही मैं अपना फाइनली उस पर रैंक कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज पे मैंने 5 से 6 साल के फाइनेंशियल्स यूज किया है। तो लाइक टू लाइक कंपेरिजन के लिए किया है उसमें। ठीक है, जो स्टेट्स में चेंज हुए, इट्स नॉट रियली रिलेवेंट एंड कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड कि ये मॉडल ने किया ऐसा कुछ, तो ठीक है, विल मूव ऑन। ठीक है, फाइनली अब मुझे मेरी कंपनीज, मेरे को अभी मेरे पास जो लिस्ट आई है, मेरे पास 81 कंपनीज की लिस्ट आ गई, इसको मैं चाहता हूँ रैंक करना। ठीक है, अब इनको रैंक करते टाइम मैं अब एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा हूँ। अपन जनरली बिलीव करते हैं कि हाई ROC कंपनी इज गुड फॉर अ बिजनेस, राइट, कि हायर द ROC हाई, तो प्रोबेबली कंपनी वुड बी अ गुड वेल्थ क्रिएटर एंड सब ऑल दोस थिंग्स। तो हाइपोथेसिस में जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 81 कंपनीज में एक पैरामीटर डाला कि अगर पिछले 5 साल का ब्लेंडेड ROIC कंपनी का मोर देन 5% में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसमें मोर देन 5% है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसमें मोर देन 7% है, ऐसे करके 2-2% के डिफरेंस पे 21% तक। तो एज यू कैन क्लियरली सी, तुम्हारा शार्प और काल्मर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिकली में काफी डिफरेंस है। ठीक है, काफी इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। साथ में तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी काफी रिलेटिवली बेटर है। तो व्हाट दिस टेल्स मी इज कि अगर मैं हाई ROIC कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेरा काफी अच्छा रहता है। ये मेरे को ये डेटा पूरा प्रूफ करके दे रहा है। ठीक है, तो अब जब मेरा मॉडल हाई ROIC कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरा रिटर्न्स इंप्रूव होगा। लेकिन यही हाइपोथेसिस जब मैं टेस्ट करता हूँ ऑन सेल्स केगर,
कि मैं अगर हाई सेल्स की अगर कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ वर्सेस लो सेल्स की अगर कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा इम्प्लीकेशन क्या होता है, राइट। एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि जब लो सेल्स की अगर वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वर्सेस हाई सेल्स की अगर वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर सब लाल है, एवरीथिंग इज रेड, हियर एवरीथिंग इज मोर और लेस देयर शेड्स ऑफ ग्रीन हियर, राइट। सो व्हाट दिस टेल्स मी इज कि व्हेन यू इन solely try to invest in a high growth company, you are more likely to generate low risk adjusted रिटर्न शायद जनरेट कर लोगे बट रिस्क एडजस्ट लो होगा, मतलब राइट ना, वो जो रिस्क ले रहे हो उसके साथ कमेंसुरेट नहीं होगा। और सिंपल रीजन भी कि तुम एक एलिवेटेड वैल्यूएशंस में एंटर कर रहे हो, बिकॉज जहाँ पे कंपनी हाई ग्रोथ की रहती है उधर मार्केट एनीवेज उसको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा होता है, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट एट दोस प्रीमियम वैल्यूएशंस एंड ग्रोथ डज नॉट टर्न आउट टू बी as it was expected by the market, stock gets derated, which results in this kind of poor performance जो अपन को इधर अभी डेटा क्लियरली शोकेस कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली, व्हाई दिस काइंड ऑफ पुअर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो इज जनरली स्मॉल मिड कैप में तुमको हाई ग्रोथ कंपनीज देखने मिलती है कंपेयर टू लार्ज कैप। सो नेचुरली ये पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज स्मॉल कैप की तरफ ग्रेविटेड हो गई। एज यू कैन क्लियरली सी जो एवरेज मार्केट कैप था कंपनीज का लो ग्रोथ में वो 21-22 हजार के आसपास था, इधर वही नंबर 12,000, 15,000, 17,000 आ गया। तो ऑब्वियसली जब तुमने हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश की, सो यू वेंट डाउन द एम कैप कर्व विच अगेन इंक्रीज द वोलेटिलिटी इन योर पोर्टफोलियो। इवन इफ यू, अगर ये डेटा पे भरोसा नहीं हो रहा, एक दूसरा डेटा दिखाता हूँ ये चीज को प्रूफ करने के लिए। सो लेट्स से अपन है ना जुलाई 2019 में खड़े हैं, एंड क्यों जुलाई 2019? बिकॉज उस टाइम तक FY19 के सबके नंबर्स आ जाते हैं, जनरली 2 महीने में आ जाते हैं, अपन जुलाई समझ के चल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पिछले 5 साल 14 से लेके 19 तक में जो EPS के था सब कंपनीज को ऐसे बकेट किया, 10 बकेट्स बनाई। टॉप 10 EPS ग्रोइंग कंपनी, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, करके पूरी बकेट्स में कंपनीज बांट दी, 10 बकेट्स में कंपनीज बांट दी, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट बकेट में आ रही है कंपनीज जो ऑन एन एवरेज उनके बेसिकली 20-21% का ग्रोथ किया, ऐसे करके सिंपली डाउनवर्ड कर्व है, ठीक है। इधर साइड पे लो ग्रोथ कंपनीज है, इधर हाई ग्रोथ कंपनीज है, ठीक है। और साथ में उनके वैल्यूएशन रेंज में डाल दिया। नेचुरली हाई ग्रोथ कंपनीज का जो प्राइस टू बुक बेसिस पे ये महंगी थी, राइट, इनका वैल्यूएशन ज्यादा था, राइट। तो इस साइड पे तुमको ग्रोथ कंपनीज मिल रही है, इस साइड पे तुमको वैल्यू एंड पे कंपनीज मिल रही है। अब व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी कि 2019 से 23 तक यही कंपनीज ने किस तरह की ग्रोथ डिलीवर की, राइट। एंड एज यू कैन क्लियरली सी जो कंपनीज महंगी थी, ये सबसे महंगी कंपनी थी, 20% की ग्रोथ पास्ट में की थी, एंडेड अप अंडर परफॉर्मिंग 10% की ग्रोथ। इधर जहाँ पे मार्केट को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिकॉज स्टॉक 5-7% का ग्रोथ दिया था EPS लेवल पे, एंड देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन, उसने 13-14% की ग्रोथ दिया। दिस क्लियरली शोज, जब नाउ जस्ट इमेजिन हैड यू इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द बास्केट, ये वाले बास्केट में तुमने इन्वेस्ट किया होता हायर वैल्यूएशन पे, एंड अज्यूमिंग की जो पास्ट ग्रोथ है वो एक्सट्रापोलेट कर दी होती फ्यूचर में, एंड वो ग्रोथ कंसिस्टेंटली रहने वाली है, दो चीज होती, एक तो EPS टेकर नहीं आया सबसे पहले, तो तुम्हारी EPS ग्रोथ नहीं है 10% की, दूसरा तुमने डी रेटिंग के भी कैंडिडेट बनने होते, तो अर्निंग्स ग्रोथ भी नहीं आई और डी रेटिंग भी हो गई। द अमाउंट ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो तुम्हारा इधर हुआ था वो भी अनप्रेसिडेंटेड, एंड दिस इज व्हाट जनरली जो गलती वी एंड अप डूइंग कि रीसेंट अर्निंग ट्रेजेक्टरी को भी एक्सट्रापोलेट टू फार इनटू द फ्यूचर अज्यूमिंग कि चले गई, and which results in all the blunders that we see, right? So so this clearly shows and sends my message कि simply chasing growth doesn't help, but the question is कि करे कैसे? Ultimately market only respects rewards growth companies, right? कि जहाँ पे growth होगी उधर market gives a higher valuation multiple. uh, so for that you can, the only thing we have found we can do is balance it with valuation and ROIC, and this is what exactly this model does. So we rank the stock on the basis of growth, quality and valuation. As I showed, सिर्फ ग्रोथ पे करता तो मेरा परफॉर्मेंस पूरा होता। क्वालिटी और वैल्यूएशन जब मैं पिक्चर में लाता हूँ, एक ग्रोथ कंपनी को एक अच्छी क्वालिटी और वैल्यूएशन के साथ मर्ज करता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस काफी ट्रेमेंडसली इंप्रूव होता है। तो दिस आर माय फाइनल स्टैट्स दिस। सो एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 27% का केगर हिस्टोरिकली आया होता, राइट, कंपेयर टू जो मेरा बेंचमार्क था वो था 16% का। मेरा ड्रॉडाउन जो 47% का था वो 22 पे आ गया। मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 22 का 18 पे हो गया। मेरा शार्प कॉलमर 1 के ऊपर फाइनली जा चुका है।
एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि ये आउट परफॉर्मेंस 27% का आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करने के लिए मैं कोई क्वालिटी एमकेप कर्व में नीचे गया. एज यू कैन क्लियरली सी 27,000 करोड़ का जो था वही फिगर इधर 29,000 करोड़ का है. राइट. तो मैं मोर और लेस सेम एमकेप कर्व पे ही ट्रेड किया हूँ एंड उसमें गुड क्वालिटी कंपनीज एंड गुड कंपाउंडर्स उसने चिप इन किए. ठीक है. फ्यू मोर स्टेट्स अबाउट दिस कि अगर इफ यू हैड इन्वेस्ट पिछले 10 साल, ये 10 साल का एक्चुअली बेस्ट टेस्ट रिटर्न था. सो पिछले 10 साल में इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन दिस स्ट्रेटेजी एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट आई मीन एनी पॉइंट इन टाइम, 2017 के पीक में भी किया होता और 5 साल तक होल्ड किया होता, you would have 100% of the time created out performance. So this message clearly shows a message, right? कि थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करते in a strategy and have a conviction strategy for a long period of time, it clearly rewards us. Secondly, if you look at the drawdown, so blue line is our strategy. So generally the strategy has been drawdown has been commensurate with Nifty 500 or sometimes even during the COVID it was relatively better. June 2022 में थोड़ा drawdown ज़्यादा है, but this clearly shows कि more or less drawdown भी हम ज़्यादा नहीं ले रहे historically. ठीक है. And just to see the top 20 winners and losers कि किसने wealth create किया, तो generally हमने Persistent, KPR, Sonata, Torrent ये सब companies में wealth generate किया है. जयप्रकाश, शारदा क्रॉपकेम, हेरिटेज, ये सब में वेल्थ डिस्ट्रॉय भी किया. बट इफ यू अप्रिशिएट कि जनरली ये जो मेजर लूजर्स दिख रहे हैं वो मार्च 22 में दिख रहे हैं, 2020 के दिख रहे हैं. अगर उसको हटा दे तो जनरली सबसे वर्स्ट केस 35 पे ही है एंड आते आते 15 पे. तो इट्स नॉट दैट बैड अ स्ट्रेटेजी in terms of number of stocks performing poorly, right? And just to see कि कोई particular sector पे बहुत ज़्यादा emphasis नहीं था, तो जनरली कंपनी ने ना इस मॉडल ने आईटी, हेल्थ केयर, केमिकल, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, जनरली ये सब सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट किया है. दिस वर द टॉप सेक्टर्स जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट किया पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज. एंड एम कैप वाइज ये स्मॉल एंड मिड कैप फोकस्ड ज्यादा रही है हिस्टोरिकली, एंड विच इज नेचुरल क्योंकि म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी उधर ज्यादा दिखती है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा यूनिवर्स स्मॉल और मिड कैप की तरफ फोकस हो जाता है. बट एज आई शोड इन द पास्ट, इन द प्रीवियस स्लाइड, कि ये 30,000 करोड़ के एम कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करी है. एंड आज की तारीख में एमपी के हिसाब से 25,000 करोड़ के नीचे कंपनीज आर कंसिडर्ड स्मॉल कैप. सो एसेंशियली भले वो स्मॉल कैप अपन बोलते हैं 25,000 करोड़ के नीचे, बट स्मॉल कैप नहीं है, इट्स ह्यूज साइज कंपनी, राइट? इट्स नॉट कि वो सब 1,500 करोड़ कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपन इधर के रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन डिसेंट साइज कंपनी. मतलब 30,000 करोड़ इज अ डिसेंट साइज. तो क्लासिफिकेशन की वजह से इट इज नाउ सेट स्मॉल एंड मिड कैप एवरीथिंग, बट इट्स अ गुड साइज कंपनी. This brings me to end of my brief about how this strategy generates return, and I hope you are able to appreciate कि just by applying few simple rules, there were no complicated rule or new rules जो पहले किसी को पता नहीं था. ठीक है, जस्ट मैंने बंच अप कर दिया सही तरीके से, एंड उससे जो 25-30 स्टॉक्स स्क्रीनिंग में मेरे पास आ रहे हैं, बेसिकली वो चीज अब आई कैन यूज फॉर आइडिया जनरेशन. So I think that's all from my side. I'll just stop the screen sharing and allow for question and answer. So what you guys can do is basically raise your hands and I will unmute you if anyone has any questions. Yes, Shashikant, hi. Hi, Parth. Good session. I like how you passionately take these data and try to make a story out of it, and historically match it with what has happened in the past and how it has unfolded. I found a couple of things quite interesting. That is something to do with mutual fund. Is this Right. along the lines of cloning? I think it's not cloning exactly, but my question is, do you have a set of mutual funds that you consider as benchmark? And then say No, that if these funds exit, that's when we consider, exiting or, yeah. yeah. No, so yes, so fair question. So now what we have done is we have taken the entire universe of mutual funds. So we have not segregated कि मैं सिर्फ HDFC Balance Advantage fund लूंगा या पराग पारिक का fund लूंगा because they perform well in the past. वो तो again फिर वो data bias हो जाएगा. What Right. we have essentially done is कि suppose कोई let's say XYZ stock है, let's persistent system है. Persistent system में सारे mutual funds मिला के
उसमें पराग पारी भी हो सकता है, उसमें दूसरे प्रोबेबली एक्सिस फ्लैगशिप कैप भी हो सकता है, या कोई भी दूसरा अंडर परफॉर्मिंग स्कीम भी हो सकता है, राइट। सबका मिला के होल्डिंग कितना है? लेट से किसी का होल्डिंग आता है 15%, किसी का आता है 5%, किसी का आता है 6%। मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब होल्डिंग को एक साथ क्लब कर दे रहा हूँ, एंड उसमें से जो बॉटम 70% ऑफ द कंपनीज है, वो सब कंपनीज को हटा दे रहा हूँ. So that's how I'm getting those 140 odd companies based on that. So again, coming to a question कि कोई म्यूचुअल पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बेसिस पे एंट्री एग्जिट किया है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है. पूरा यूनिवर्स ले लिया है म्यूचुअल फंड्स का. Okay, because in that case, there would be few good companies. Like for example, you showed Ambika, right, in your Hmm. first Correct. slide. That is Hmm. not owned by any mutual fund. So how do you Correct. compensate for missing out on good quality companies with good valuation? But Hmm. a mutual fund is not invested, or a bunch of mutual funds have not shown any interest. But Hmm. wouldn't that lead to valuation discrepancy? And that is where you find value. So I agree that probably अगर जहाँ पे म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे और ज्यादा वैल्यूएशन फेवरेबल होगी. बट एट द Hmm. सेम टाइम, when this is human free, trying to create a portfolio where there is no human intervention, you want a certain amount of conviction कि कहीं पे कहीं रेड फ्लैग्स नहीं हो, राइट. मुझे मेरा टेल जो है, लॉस का टेल है, वो कम करना है बेसिकली. प्रॉफिट Makes इज गोइंग टू sense. टेक Yeah. केयर ऑफ इटसेल्फ. तो व्हेन आई डू दैट, प्रोबब्ली मेरे को अच्छी क्वालिटी की कंपनीज डेफिनेटली मिलेगी, सस्ती में भी मिलेगी, बट मेरा ड्रॉडाउन रिस्क वो सब ड्रास्टिकली भी इंक्रीज हो जाएगा वो चीज की वजह से. तो अल्टीमेटली व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी वेयर इट्स ह्यूमन इंटरवेंशन फ्री, इट कम्स डाउन टू अ बेसिक इक्वेशन कि what is the percentage of my success ratio? If I'm making 100 trades, am I making 50, 60%, 40, 30%, whatever that number is? Let's say it's at 50%, which is a very good number, to be honest. So even if at 50%, am I able to generate, let's say, for every single trade, am I able to generate 10% return? And for every loss, am I able to use keep it at 5% or 7%? सो इफ ये सिर्फ इतनी सी इक्वेशन, ये स्ट्रेटेजी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है कि मेरे को अपने नंबर ऑफ सक्सेस या विन रेशियो बेसिकली इंप्रूव करना है, और रिस्क रिवॉर्ड कितना लूज किया, सबसे कितना गेन किया, वो चीज को मैक्सिमाइज करना है, राइट. Got it. विद दैट इंटेंशन ऑल द स्ट्रेटेजी इज डिजाइन. बट So यस, you're यू कैन focusing on the डेफिनेटली. downside and या आई एम eliminating जस्ट the फोकसिंग. drops. Makes sense. Definitely. Makes Definitely. sense. When you are so when you are going to have a human intervention, and you're जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होने वाले, जहाँ पे यू आर गोइंग टू क्वालिटेटिवली चेक कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है, या कोई कोई सीजी इश्यूज है कि नहीं है, तब यू कैन एक्चुअली गो डाउन दैट कर्व. बट यहाँ पे तो Hmm. मैं कर नहीं सकता. मैं तो पूरे बास्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा. मैं मेरे को पता है, आंखों के सामने भी दिखेगा कि ये कंपनी गलत है, फिर भी मैं इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे मॉडल ने बोला है. आई हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन. तो जब वो हो रहा है, तो मेरे को आई नीड टू बी श्योर कि इस तरह की कंपनीज मिनिमम है, Got it. अदरवाइज मेरा कन्विक्शन हिलेगा. Yeah. My second question is with regards to the number of stocks that would show up out of this filter. Is it 25? Is that something that you're fixed? Or if I, as a हाँ. सो subscriber, want to say, if I ask for 40 stocks, for example, because I want to increase it, how does it work? Like, हाँ. सो व्हाट वी हैव डन इज, जो 81 कंपनीज लास्ट में बच रही थी ना, Hmm. उसमें क्वालिटी ग्रोथ और वैल्यूएशन पे जब कंबाइंड रैंकिंग किया, तो हमने टॉप 25 टू 30 कंपनीज ही सिलेक्ट कर दिया. सो वी कैन ऑब्वियसली इंक्रीज दैट लिस्ट कि भाई मेरे को वी कैन एसेंशियली आस्क द मॉडल टू गिव नेक्स्ट बेस्ट 40 कंपनीज. मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बेस्ट 25 कंपनीज, क्योंकि वो सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन भी दे देती है, एट द सेम टाइम बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं. इट्स अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लिस्ट फॉर अ पोर्टफोलियो. तो उस हिसाब से मैंने 20-25 पे एग्री अपन किया था. बट हाँ, Okay. 40 भी जनरेट कर सकते हैं. इट्स नॉट अ टॉल टास्क. And this you run every month, एवरी मंथ ऑन 15th. 15th of every month. 15th ऑफ एवरी मंथ. एंड द रीजन फॉर सिलेक्टिंग 15th इज कि बिकॉज मेरा जो बेस है वो म्यूचुअल फंड निफ्टी 500 है, एंड म्यूचुअल फंड Hmm. की होल्डिंग्स है जो 15th तक जनरली अपडेट हो जाती है. Okay. यस. Got it. And if there is any abrupt market reaction, do you rebalance it or you let it pass through? Like नो. currently, there is this phase wherein the election and other things are, राइट. constantly being debated. So do you make राइट. some changes to नहीं. No. no? So again, so the part of this process is keep it simple, keep it systematic, and discipline में वही करते रहो. जस्ट बिकॉज मेरे को लग रहा है, इट्स अगेन इट्स आवर व्यू कि हो सकता है इलेक्शन की वजह से वोलेटिलिटी है, हो सकता नहीं है. वो व्यू को अगर मैं मॉडल में इनकॉर्पोरेट करने जाता हूँ ना, दैट्स व्हेन यू नो
वो ह्यूमन इंटरवेंशन आना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली मॉडल का पर्पस डिफीट हो जाता है. सो कीप इट एज इज, वो अल्टीमेटली आउट परफॉर्मेंस जनरेट करता ही है. I think that was one drawback with the magic formula also, right? Where whenever the human intervention was higher, the returns were not Right. that great. So you make Correct, sense. absolutely. Yep. Okay. Thanks, Parth. Yeah, If I have any yeah, questions, I'll join back. sure. Good luck. Yeah, thank you. Yes, Kunal, I've unmuted you. Yeah, hi Parth, and excellent presentation. Yeah, you and your Thank team. you. Yeah. So I wanted to ask on that there are three things, right? Growth, quality, and value, right? Mhm. So first and third, which believe that it's a quantitative matter, right? But how do you evaluate quality, which includes corporate governance or management checks and all of those things, which includes even the ground research or such things. If we Mhm. do as a fundamental thing, so Mhm. how do you evaluate these particular things Mhm. with the help So, of your tool? okay. So, if you have read this book, so Kunal, if you must have read the book of Pulak Prasad, so that guy Yeah. simplified in such a way कि कुछ भी कर लो, जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस है, कि वर्किंग कैपिटल साइकिल के डिसीजंस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, सब कुछ बॉइल डाउन टू वन सिंगल मैट्रिक विच इज आरओआईसी, राइट? तो इट्स आरओआईसी सच अ पावरफुल मेजर कि वो बिजनेस के कैपिटल एलोकेशन डिसीजन से लेके कैश फ्लो डिसीजन से लेके डेट लेना है कि नहीं लेना है, इक्विटी से डाइल्यूशन करना है नहीं करना, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच रखनी है कि कंप्रेस रखनी है, एसेट टर्न कैसे रखने हैं, सब कुछ का मिशन एक सिंगल नंबर पे बेसिकली आ जाता है. सो आरओआईसी इन दैट केस इज अ वेरी पावरफुल नंबर जो क्वालिटी पार्ट को काफी अच्छे से टेक केयर कर लेता है. सेकेंडली, जो एज यू सेड कि कोई सीजी इश्यूज वगैरह, तो इसलिए हेंस एज आई सेड कि म्यूचुअल फंड और जेड स्कोर बेसिकली वो चीज का मेरे को कंफर्ट दे रहा है कि जहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग अच्छी है एंड जेड स्कोर है, जेड स्कोर काफी कंफर्टेबल है, मतलब उसका डेट या उसका इशू नहीं है, कंपनी बैंक्रप्सी की वजह से मैं पैसा गवा लूंगा ऐसा चांस कम है. ठीक है, अगर वैसा होने वाला होगा देन ही वो नंबर 3 को हिट करेगा, मेरा पोर्टफोलियो एग्जिट मार देगा उसको, एंड वो नंबर 3 को हिट करे उसके पहले म्यूचुअल फंड्स को एनीवेज पता चल जाता है कि कंपनी गई, राइट, एंड उसके पहले वो लोग एग्जिट कर देंगे. देयर टू बेसिकली rules are there which are here to protect me against those kind of cases. Again, my entire focus is to protect my downside. Upside generally takes care of itself. It's not a tall task. So yeah, have I answered your question? Understood. Okay. And the second question on that, how frequently you use this tool? Because see, anyways, during the quarterly numbers, IT must have, reject over the last, like the numbers are pretty low over the last 1.5 years. So Mhm. what, how do you know frequently use this tool and the companies which comes under your criteria and which goes out of the criteria on the basis of quality or earnings are the three metrics which you guys are using, right? Mhm. So, So this tool has, so I use it rigorously and regularly. So that is the whole purpose कि you have to stay invested for whatever the output जो ये दे रहा है उसमें you have to keep invested. जो जब भी मंथली रीबैलेंस होता है तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा पोर्टफोलियो शफल भी हो जाता है. इट्स एक दो कंपनी अंदर बार या दो तीन कंपनी अंदर बार ही हो रही होती है. सो इन दैट सेंस द मॉडल इज okay. स्टेबल, राइट? तो एनीवेज कोई चर्न नहीं आता, इतना सिग्निफिकेंटली हाई चर्न नहीं आता, तो Understood. So on, you can use it. okay. So हाँ, to the extent, acha, सॉरी क्या so कह रहे to the हैं? extent you guys, track all these companies' quarterly numbers and this, हाँ, yes. So we keep looking for ideas from this list you as know? well. Yes. Okay. 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 Um, And the lastly on this market cap matter, as of now you have mhm. a great major exposure in the mid and small cap. The large cap is only Correct. 11%. Correct. So these things also keeps going change, right, according to the market scenario and according to Correct. your So view. yeah. So this is again. So yeah. So this is not at my discretion, to be honest. So model automatically decides कभी large cap, mid cap का allocation ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है. समझ वो डायनामिक है, वो उस पर ट्रस्ट करके चलते जाओ. इट्स बेसिकली दैट. not मेरे really. इट हैज नॉट. सो टू बी ऑनेस्ट, आज मेरा अगर सपोज व्यू भी है फॉर एग्जांपल कि लार्ज कैप ज्यादा चलेंगे, आई कैन नॉट आस्क माई मॉडल टू भाई तू लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर. ये मेरा व्यू है, मॉडल का व्यू नहीं है. मॉडल का पर्पस अलग है, वो अपने हिसाब से करेगा. इसलिए डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट, दिस काइंड ऑफ स्मार्ट बीटा एंड फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट. Probably my view can be neglected, my view can be probably proved right. Either way मॉडल परफॉर्म कर जाता है.
Any other questions, Kunal? Thanks. Okay. Not now. Okay. Just hold on a second. Krishna, you can unmute yourself. Hey Parth, thank you. Hi. Hi. So sorry I missed the initial part of the session. So I just have want to know your views on. You mentioned you can chase the growth by managing the risk. So how is the model going to do about it? Is it a valuation based or purely the mutual fund allocations? Or is it increasing, decreasing? How is that model going to catch the trend at the same time manage the risk? So when the model is trying to invest in high growth companies, we are trying to balance it out obviously with the valuation. Valuation is single most important thing. So what I've observed when I was, running a number of iterations is if I exclude the valuation part and you try to invest at any price, your model does not perform as well. So I think valuation is a good important factor while which determines your returns. So when you try to balance your growth with a quality, basically your ROIC or any other quality metric that you can choose, probably you can since मैंने अभी single factor लिया है कि ROIC में एक quality को define करने के लिए मैंने सिर्फ ROIC use किया है. You can even use multiple parameters ROIC, ROA एंड उसके ऊपर भी रैंकिंग मल्टीपल फैक्टर्स पे रैंकिंग कर सकते हो कि ये सब पे अगर अच्छा होगा तो मैं उसको बोलूंगा क्वालिटी कंपनी. यू कैन डू दैट एज वेल, मतलब इसमें नहीं किया है बट सो माय आंसर टू योर क्वेश्चन, रिस्क मैनेज करने का एक ही तरीका है कि उसको क्वालिटी और वैल्यूएशन के साथ मर्ज कर दो सो दैट फाइनली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी वो ऐसी है कि उसकी ग्रोथ है बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट पेइंग एब्सर्डली हाई प्राइस टू इट या एब्सर्डली इन्वेस्टिंग एट अ एब्सर्डली लो क्वालिटी कंपनी. सो इसमें कभी इसमें कभी भी प्रोबब्ली फिनटेक कंपनीज है इस तरह की जो आज लाइक टीवी फिनटेक जो हमारे एनीवेज उसमें रिकमेंडेशन में है लेकिन इसमें नहीं आएगी बिकॉज करेंटली उसका आरओआईसी लो है एंड दैट्स फाइन, मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ द मॉडल क्योंकि आज ऑन द सिंगल मेट्रिक दैट आई हैव यूज्ड ऑफ द आरओआईसी उसके केस में वो अभी लॉस मेकिंग है या प्रोबब्ली सिंगल डिजिट नंबर है, तो दैट्स फाइन मतलब. Got it. So basically, cyclicals will be avoided to an extent, and uh, commodities will be avoided to an करेक्ट extent. करेक्ट. Okay. अभी तक तो But मैंने नहीं देखा कोई भी टॉप परफॉर्मिंग कमोडिटी कंपनीज में उसमें नहीं आई है. understood. So then, in that case, how can we catch the commodity reversal or sectoral reversal? So to be honest, I have actually failed in that. So I've tried that thing as well. So what I did was, and I will tell you, so commodity catch करने का एक तरीका है कि you play the margin game, EBITDA margin, operating margin game. So what I used to do, I created a different model, not this one, जहाँ पे I was essentially trying to invest, जहाँ पे उसके जो पिछले 10 साल का normalized margin है, उसके 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे एंड ट्राइंग टू एग्जिट जब उसका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर चले जाए मीडियन के. राइट, दिस वाज अ स्ट्रेटजी आई ट्राइड टू अप्लाई बट द रिटर्न्स वर पैथेटिक, ड्रॉडाउन्स और ही पैथेटिक थे और साथ में रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक और ये सब पे भी हो नहीं रहा था. सो टू बी ऑनेस्ट आई फेल्ड ट्राइंग टू कैच द सिक्लिकल्स. मैंने आई इवन ट्राई टू मर्ज इट विथ मोमेंटम कि जब प्राइस, क्योंकि जनरली कमोडिटीज में ही होता है प्राइस पहले भागता है फिर मार्जिन के नंबर्स आपको दिखने शुरू होते हैं, तो आई ट्राई टू मर्ज इट दैट एज वेल बट उसमें फिर विपसॉस बढ़ गए कि यूनिवर्स में एक महीने आ रहा है फिर अगले महीने निकल जा रहा है स्टॉक, फिर एक महीने आ रहा है फिर निकल जा रहा है, तो दैट इज बेसिकली द मॉडल इज एक्टिंग डम, राइट. So I don't want that as well. So I failed, to be honest, on that part. I'm trying to figure out. No, yeah, I just I mean, I've thought of discussing your views on it. Understood. Sure. I mean, that's it from my side. If anything else, I'll come back on this. Sure, Krishna. Thanks, Parth. Yeah. Parth, Yes. sorry to interrupt. Sorry. There is one question in the chat box by Gurji. He's asking what is the max amount of drawdown you feel comfortable with your strategy? Can you please answer this? So generally, I want the drawdown to be less than what my benchmark is. So generally, your benchmark will have drawdown of probably 25, 30, 35% maximum. I think anything above that is too uncomfortable for even for you to stick around with the strategy, because अगर आप तुम portfolio 40, 50% जितना drawdown देख लियो portfolio में, तो you will start questioning the strategy at that bottom.
And when you start questioning the strategy, you will not stick with the strategy. And if you don't stick with the strategy, ultimately you are likely to underperform, right? The main thing about any this kind of strategy is कि वो एक period of underperformance में जाएगा, and वो underperformance would not be like 1 या 2 साल की, 3-4 साल की underperformance भी हो सकती है. And when that happens, you have to have conviction कि भाई ये चलेगी strategy. एंड अगर उसमें 40-50-60% का ड्रॉडाउन देखने मिल गया तो सॉरी बॉस यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा. तो आई थिंक मेरा लिमिट तो उतना ही है कि मैं एटलीस्ट मैं बेंचमार्क से ऐसा लूंगा, इसमें बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ड्रॉडाउन. तो आई वुड बी कंफर्टेबल, या थोड़ा बहुत आसपास, मतलब नॉट टू मच डेविएशन फ्रॉम दैट. हाँ. यस जयेश, आई अनम्यूटेड यू. Yeah, hi Parth. Am I Hi audible? Jayesh. Yes, you're audible. Okay, thank you, Parth. First of all, to you made it very easy. The complex subject you made it very easy, and yet it is very effective. So I don't know whether I missed that part or not, but for my understanding, if you can just repeat. So in this strategy, what is the exit? How do we exit the stock? So what is the so there would be a times where the stocks have when do we exit these stocks? So exit strategy is simple. So I think as some asked, I think Sashikant asked, कि we select the top 25 to 30 stocks. So whenever so हर महीने स्टॉक की रैंकिंग हो रही है, रैंक 1 2 3 4 5 6 से लेके 80 90 तक जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स है यूनिवर्स में उस एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो जब भी उस स्टॉक की रैंकिंग 30 के ऊपर चली जा रही है ना, स्टॉक ऑटोमेटिकली मेरी यूनिवर्स से एग्जिट कर जा रहा है. या एक तो ये है. दूसरा एग्जिट स्ट्रेटेजी है कि अनलेस मेरा कंपनी कोई बेसिकली जेड स्कोर उसका 3 के नीचे चला जाता है तो मेरा यूनिवर्स एग्जिट कर जाता है. म्यूचुअल फंड की होल्डिंग उसमें गिर जाएगी तो मेरा यूनिवर्स सॉरी मेरा मॉडल उसको एग्जिट कर देगा. तो ये 3 एग्जिट कंडीशंस रखी हुई है जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है. लाइक फॉर Everything is एग्जांपल, based on quant and nothing on the technicals. नो 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 नथिंग, कोई टेक्निकल नहीं है. सो मैक्सिमम यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली ऐड. सो इसमें भी 3 पैरामीटर्स रखे हैं ना, कि ग्रोथ वैल्यू एंड मोमेंटम इज सॉरी ग्रोथ वैल्यू एंड वैल्यूएशन. तो यू कैन इवन मर्ज इट विथ मोमेंटम की चौथा पैरामीटर वैल्यू मोमेंटम का डाल दो. तो दैट इज द टेक्निकल पार्ट दैट यू कैन आई थिंक यू कैन कैप्चर, बट मैंने इसमें किया नहीं है फिलहाल. Got it. Got it. Okay. Thank you, Parth. And can हाँ. we also ask questions about the research or that we can take it offline? No, you can ask, I think that's fine. Okay. So just to ask you, so what is the is there any frequency, like will you be coming out with a new stock every month, every quarter, something, or as and when you finish your study and you get any conviction? So to be honest, every month we are anyways working on 3 to 4 ideas, and any idea that we find compelling enough, we will inform our subscribers. I think that is the strategy that we are currently following. We are not committing कि इतनी companies हम will upload it only. It's not possible humanly because it would be No, that's fine. Till the हाँ time you're yeah getting a quality research, we do not want number of ideas, but whatever we generate, it should be quality. So I think correct your focus correct be there only. yeah. Second, is there any criteria over there also that we'll not be covering any companies which are less than 5,000 or 2,000, any kind of a this thing, and we'll be covering only in a market cap of, because most of the companies, what I see, is in a market cap of range of 10 to 20,000. No, so as such we have not put any restriction. We are completely open for sub 500 crore company to sub 5 lakh crore plus company. हमको जहाँ पैसा बनता दिखना चाहिए, पैसा बन रहा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे. मतलब वो Got it. सिंपल स्ट्रेटेजी है, अपने आपको लिमिट नहीं करना. Perfect. Perfect. Will do. Thank you, Parth. Thank you. Yeah. Yes, Ravi. Ravi, I unmuted you. Hi, Parth. Yeah. Amazing presentation and very informative also. So I was wondering, have you applied the same model? And I categorically like the use of Altman Z-score and Sharpe ratio to address two major factors. But have you tried applying the same model if I put in a criteria of companies not above 10,000 crore rupee market cap? Okay. I relaxed the criteria that mutual fund participation should be there. Okay, but I put in a different market cap idea. So have you tried that? Not so far, but probably I can try that. So, Yeah, so I will please. tell you. So, I'll tell you currently the problem
that I'm facing is of the starting universe. So I want my universe to include all the bankrupt and all those kind of companies so that survivorship bias नहीं आए. And the problem is कि वो companies past में जो exist करती थी and bankrupt हो गई, उनका नाम लाना is a difficult task currently because of data integrity issue. So I am just trying to figure that part out. Once I do that, then I will try all those kind of things that you are talking about. Definitely. Because we can significantly reduce the numbers by if we put in a criteria that Sharpe ratio should be greater than 1 and Altman score should be greater than 3. Okay, so like that reduces the universe considerably. And I mean, again, I'm just asking from you, because your model is pretty good. Like, it tries to combine various elements from value investing, growth investing, coupled with, factor-based investing. So that's why the intersection has given such robust numbers. But Right. just wondering, toying around with an idea, because primarily I'm a value investor and I prefer looking at companies which can grow and I need not pay for that growth. Right. So just an idea, but yeah, again, very well explained model and good work, I must say. Thank you, Ravi. Thank you. Thank you. Yes, Kunal, I unmuted you. Yeah, thanks for the follow-up. Just one question on that. You have excluded the BFSI. So will you be going to, add this particular sector in your model? Because anyways, in the mutual fund side, it's contributing 35% of the entire weightage, right? So how will you look at this particular sector? So I'm already working on it. So BFSI के लिए different set of rules के through I'm passing that set of companies. So it's WIP basically. So in some time probably I will release that part as well. I don't think there are any other questions. Is there, Navid, Sanjay? Nothing. If anyone still wants to ask a question, you can raise your hand and we'll unmute you, and then you can ask a question. We'll wait for a minute or so, and then if there are no questions, we'll close. Sure. I think it looks good. No questions, Parth. Okay. We can wrap this up. You can give your closing comments, if any. Sure. So thank you guys for joining in. And wait, I think Jayesh has one question. Okay. Yeah. Okay, just hold on. Yes, Jayesh. Whenever you cover any stock, we definitely get your detailed research report and all. So are you also planning to conduct a short video, where you say the thesis and the antithesis also? Because see, when you talk, it gives us more confidence and all. Like on this quant model, when I just go to your website, it doesn't give me that kind of a confidence. But the post today's meeting, it definitely gave a lot of confidence that we can go out and try that particular thing. But also on the stock specific ideas that you generate, so are you planning any kind of a video, a short 30 minutes video or something? So Navid, would you like to take that answer question? Yeah, sure. Jayesh, I mean, that's a relevant question. And to be very honest, we also have deliberating this idea amongst ourselves. But I'll tell you what's the thought process. Whatever, so far we have been doing, we have made sure that there's a continuity aspect to it. We don't want to, be a one-trick pony kind of, organization or a platform. So your point well taken, suggestion well taken. We are deliberating this internally. Not sure when we'll put this idea into action, but hopefully we'll put it soon. So thank you guys for joining in. I think it was a overwhelming response from you guys, and hopefully me and my team can continue doing this good work. Okay, thank you so much. Bye bye. See you next time.